Hello everyone, I'm Mamta Gupta. Welcome to our channel EasyCoding by MG. Friends, today we are creating a bubble animation like this. In this animation, bubbles are going to bottom to top with separate time and with separate shapes. So today we are creating like this animation. Let's go on editor. Here I have already written a basic structure of HTML. First we give black color to body. So let's give #00. #00 is a black color. Okay. Now we give headings. Now give CSS to h1 and h3 tag. First we give font size to them. Hash. It's a white color. Code in hexacode, okay? We give some space from top. Okay, let's save it. We save is bubble.html. हम इसे bubble1 कर लेते हैं. ओके ओके our path is wrong. We save here. So now check it output of this file. Its heading tag color is black because we don't give a color to headings. So now give to color and some space. Now check it again. Okay, now it's better. So friends, now we create bubbles. For this we use our image. Let's create first div. We insert our image, which we have images folder, bu.png. Okay, now paste it 10 times. Okay, and again 12 हो जाएगा. Okay, now again save it and show check images. Our images show like this. To set this, we give CSS to this file, two images. First we give display flags. Now save it and check it again. This is called because our images is so much. So don't worry, when we use animation, it is customized. Okay. We give width. Therefore,
अभी एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ वी गिव एनिमेशन टू इमेजेस। We create her. For create animation we use create @keyframes and bubble name। मतलब जो भी हमने एनिमेशन नेम दिया है वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, when our animation 0%, its opacity is 0। ओके, and when our animation is 30%, okay, now check it, our animation works not, now it's working to। बट ये क्या हो रहा है, ये हमारे सारे बबल्स एक साथ जा रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं, तो इसको हमें टाइम को सेपरेट करना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एनिमेशन डिले। ओके, तो हम यूज करते हैं एनिमेशन डिले। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे इसके बबल्स का, जो बबल्स के अंदर जो हमने इमेजेस लगाई हैं उसके अंदर nth चाइल्ड, मतलब आपको कौन से नंबर की इमेजेस यूज करनी है, nth चाइल्ड। अब चाइल्ड में आपको कौन सा नंबर का चाइल्ड यूज करना है, आपने 9 10 इमेजेस लगाई हैं तो आपको कौन से नंबर का यूज करना है, तो आप यहाँ पे नंबर देंगे 1 नंबर का। हम यहाँ पे एनिमेशन डिले देंगे 3 सेकेंड। ओके, एंड हम बबल की साइज को भी चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम एंटर यहाँ पे इसकी विड्थ भी चेंज कर देंगे। एंड विड्थ चेंज करेंगे तो इसकी हाइट भी फर्क आएगा, तो हम यहाँ पे हाइट भी इसकी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप इसकी साइजेस को इस तरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, 10 टाइम मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। तो हम इसको यहाँ पे चेंज करते चलते हैं।
मैं इसको सेव कर लेती हूँ फाइल को। आप इस तरह अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन टाइम को डिले कर सकते हो कि आपको कितने वक्त में एनिमेशन लेट परफॉर्म करानी है, और उसी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसकी हाइट एंड ब्रेड्थ सेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारा कैसा परफॉर्म हो रहा है। आप देख रहे हो बबल्स छोटे बड़े हो गए हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको अगर नहीं सही लगता है, ज़्यादा छोटा बड़ा लगता है, तो आप यहाँ से इस तरह करके चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा छोटे बबल्स लगते हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, जैसे कि ये ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसको 70 कर देती हूँ एंड हाइट इसकी मैं कर देती हूँ 40। कुछ बबल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि हाइट की वजह से ही छोटे लग रहे हो ना, तो आप उस तरह परफॉर्म कर सकते हो। अब बात आती है कि जब आप इसको करा रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम इसको एनिमेट करा रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये एक लाइन से आपको शो हो रहा है, उसके बाद प्ले हो रहा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने जो बॉटम दिया है, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे बॉटम दिया, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, माइनस में वैल्यू दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 90 दे दिया है, तो वो अपने आप ही आपकी स्क्रीन से बॉटम की तरफ नीचे को हो जाएगा, जो आपको शो नहीं होंगे। ये देखिए, अब आपको बबल्स शो नहीं होंगे, ये अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर आएंगे, आपको शो होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।